हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि समस्त भल थे। समस्त अनुरोध कि समस्त शेयर कर दियो सो तार कि हम क्लास को आगे बढ़े। आउ टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी समस्ते टिके सेटा को शेयर कर दियो। सॉरी टेलीग्राम लिंक टाइम जॉइन कर दियो सो दैट प्रति नोटिफिकेशन हम से जगह प्रोवाइड कर देबो आपको। ओके चलो आरंभ करिया। लास्ट शेयर प्लीज। आ गोटे सेकेंड समय ना टिके समय दियो टिके खाली मुठी कनेक्ट कर दो। ओके स्टूडेंट मैंने 5 मिनट समय दियो 5 मिनट भीतर मु करू छला। कोन चलो आरंभ करिया क्लास टी को है ना। तो नो इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी
mention. Okay, DPSP କେତେ number part ରେ Indian constitution ରେ mention ହେଲା. DPSP ଆମର constitution କେତେ number part ରେ mention ଅଛି. ଯୋଉମାନେ online ଅଛ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କି answer ଟା ଦେବାକୁ है ना. And I hope कि ସମସ୍ତେ answer ଦେବେ. देखो एटा हम हमरो part 4 of the Indian Constitution. Okay, part 4 of the Indian Constitution is the right answer. Okay, तापर देखो from which country's constitution we where the DPSP were borrowed. Okay, जदि हम DPSP देखिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम को जगह बोरो करबा यूएसए आयरलैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया को जगह हम को जगह बोरो करबा डीपीएसपी हां डीपीएसपी को हमें बोरो करबा हमरो आयरलैंड. ओके आयरलैंड रो हमें बोरो करबा. ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्कोप ऑफ डीपीएसपी. ओके है ना स्कोप अब मत गोटे सेकंड समझ ठीक है जस्ट गिव मी वन सेकंड जस्ट गिव मी वन कंटिन्यू इंटरप्शन. I'm sorry students ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଥିଲି ତ I'm sorry for interruption है ना. तो देखो which article in the constitution DPSP define as the scope of DPSP. Okay जो देखिए को केते रु केते आर्टिकल विषय देखा जाए दैट इज आर्टिकल 36 को है आर्टिकल 36 इज द राइट आंसर रे उस जगह रे. तापर देखियो which of the following is true about the DPSP policy. ओके जो देखिबा या भीतर कोडा सत्य मानिबा DPSP policy directive principle state policy है ना. They are enforceable by court, they are binding on the state and they are non justiciable in nature. They are only applicable to the union territory. Okay कौन रहे राइट आंसर तार यदि देखो राइट आंसर रहो मिथुन. वेरी गुड इवनिंग मिथुन है ना. बहुत बढ़िया गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू है ना. देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डीपीएसपी है ना. ऑप्शन सी दे जंदी नॉन जस्टिसेबल नेचर. यस इट इज यू राइट इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है ना. तापर देखो अरे हां नॉन जस्टिसेबल नेचर. हाय सर हाय वेरी गुड इवनिंग हाय है ना. तो देखो the committee suggested the classification of right into justiciable and non justiciable category. Okay को कमिटी से रिकमेंड करथिला कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट टू जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल एटा टिके ए क्वेश्चन मे भी न पचार पारे किंतु ओवरऑल मन रखि तो ए जो ग्रेड ए एग्जाम पे जो मन यूपीएससी और ओपीएससी लेवल जो मन दोछ हना
से माने हां ऑप्शन बी हैला ऑप्शन बी हैला यूपीएससी ओपीसी जो मान दो से मानो पे हेदा इंपोर्टेंट रह जाउची को कमिटी रिकमेंड करथला हैला साप्रू कमिटी ओके साप्रू कमिटी रिकमेंड करथला हैला तब 1945 रे ओके which article of Indian Constitution describe the state to promote the welfare of the people? Okay, the article Indian Constitution directed the state to promote to the welfare of the people. Article 38, 39, 40, 41. कौन रहेगा से जगह रे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द स्टेट प्रमोट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल ओके प्रणाम प्रणाम बहुत गुड इवनिंग प्रीति एंड मिथुन विजन देखो बहुत स्वागत हमर चैनल है ना तो कौन रहेगा से जगह रे Article 30, 39, 40 and 41. Article 38 is the right answer. Article 38 right answer. The concept of uniform civil code is mentioned in which article of Indian Constitution? Hala. I'm audible. I'm audible all of you. Priti and Mithun, I'm audible. Most sound so clear. The Union Civil Code. Uniform. Yes, yes. Uniform Civil Code mentioned in the article of Indian Constitution. Article 43, 42, 44, 45. Okay, very good. 45 is the right answer, है ना? 45 is the right answer. हाँ. तापर देखो which of the following DPSP inspired by Gandhian principle? Okay, जल्दी देखिए following DPSP inspired from Gandhian display Gandhian principle. DPSP inspired होती Gandhian principle promote international peace, organization of village पंचायत, separation of judiciary from executive, equal pay of equally work कौन रहेगा उस जगह रे है ना? ऑप्शन बी बहुत बड़े जल्दी जल्दी को रैपिड आंसर नवा रैपिड आंसर है ना रैपिड फायर आंसर नवा कौन होती है जल्दी आंसर दियो ओके वेरी गुड ऑप्शन बी विलेज और पंचायत ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज अच्छा हमर पंचायत राज केते नंबर शेड्यूल रे आसे कहला समय पंचायत राज ता केते नंबर शेड्यूल रे आसेला को शेड्यूल रे आसेला हां डेफिनेटली आनी काली हला डेफिनेटली लेख दू डेफिनेटली ना काली डेफिनेटली उडे माराथन आनी हला माराथन आनी मिक्स क्लास रहा मु कही दूसरी काली माराथन आनी मॉर्निंग रानी हला काली मते टी नोटिफाई कर दो तो प्रीति मिथुन काली मते टिके मेसेज कर दो सर काली आन मॉर्निंग रे आन दो हला जेहेतु मो टिके व्यस्त भितर चलची सेटा पे मो टिके शेड्यूल हेपने काली जेतु क्लास हे पानतला आज मते व्यस्त भितर थिली तो सेटा पे टिके मते नोटिफाई कर दो हला सर आज आनंतु माने आनंतु राइट हला व्हाट्सएप रे कर दियो व्हाट्सएप रे कर दियो देखो व्हाट्सएप रे मु व्हाट्सएप डिलीट करबी कारण देखो बहुत पिला अछन देला गोटे पिला मिसबिहेव करथले जेतु मु से धमकी देली हैना इट इज जस्ट चीटिंग तो से जाय पे समस्त व्हाट्सएप रे टिके मते ये कर दो नले जदी हो माने कॉल कर दो हैला देखो तो आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स हैना कौन रहेगा राइट आंसर से जगह रे the article direct the state to provide free and compulsory education to state to provide free and compulsory education to children of 14 up to 14 कितना नंबर आर्टिकल के 21 वेरी गुड 21 ए इज द राइट आंसर है 21 ए इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया समस्त को मिथुन एंड प्रीति बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन तापर देखो आर्टिकल 21 रे ए रहेगा तो आर्टिकल प्रमोट्स देखो आउट जिंस आर्टिकल 21 दा जोड़ा टिके लेंथीएस्ट आर्टिकल 21 दा टे बहुत बड़ तो समस्त आर्टिकल 21 को समस्त देखला आर्टिकल 21 को समस्त माने एग्जाम पई समस्त देखि जाय था मु कहू जेरा को देखि जाओ काहे की बहुत लेंथीएस्ट आर्टिकल तो गोटे तीटा सब्जेक्ट सीजर तमे मन रखि जाय था ना तो मु चेष्टा करती कि हमर आर्टिकल गुडा को मु प्रोवाइड कर देबी ना कोन कोन एग्जैक्टली सेठी अछि ना डोंट वरी which article promote the educational and economic interests of a scheduled caste scheduled tribe and other weaker sections को आर्टिकल प्रमोट करे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन अच्छा मिथुन को एग्जाम थिला तमरो एस हो बोधे ना एस हो थिला ना एस और मेंस थिला बोधे ना ना एस एग्जाम थिला कि कारो एस मेंस कारो थिला आरआई थिला आरआई मेंस देलो कि देखो आरआई मेंस अभी किछि नाही ओहो
हाँ आर एग्जाम रो अछि हाँ आर एग्जाम रो अछि है ना देखो आर्टिकल होगा एटा 46 आर्टिकल 46 होगा राइट आंसर आर्टिकल 46 होगा राइट आंसर तापर देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट ओके डीपीएससी डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट होला कौन रहबो राइट आंसर यार the DPSP are state to protect and empower the environment. Article 47, 48A, 49, 50. कौन रहे बस 48 ओके वेरी गुड 48 ना बहुत मेहनत करछन हमरो मिथुन जाहलो पृथ्वी तुम दिटा को एति मो भगवान प्रार्थना करछि जॉब हे जाओ है ना चाकरी पाओ आम आम गोटे ग्रेजुएट सब करियो होला कोन आम टे कोने आम इंस्टीट्यूट रो पढी जाय बोले ना तार देखो which of the following is not a feature of DPSC okay जदि आप तो DPSC रो पार्ट कोडा नहीं है ना एटा तो आगो कहले the aim to establish a welfare state to they are enforceable by law they are including social economy political justice they are fundamental in the governments in the country हाँ कौन रहे राइट आंसर ओके या भी तो राइट आंसर कौन रहे देखो नॉट पचासी ऑप्शन बी दे आर एनफोर्सेबल पॉइंट नॉट ए फीचर ऑफ बीपीएसपी ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर से रहेगा है ना what which article directs the state to ensure equal pay for equal work for both men and women है ना the directs the state to ensure equal pay for equal work from both men and women সেটা কত নম্বর আর্টিকেল দেখো আর্টিকেল 39 ডি 39 এ 30 41 43 যদিও কি জানিছো এটা आंसर দাও চেষ্টা করো কোন হবে রাইট आंसर यार 39 डी है मन रखी था आर्टिकल 39 डी हो गई है आर्टिकल 39 डी ओके प्रीति एंड मिथुन दी जन जाको हमने जो माने भी अच्छो समस्त हम लोग है ना तापर देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन व्हिच आर्टिकल ओके देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन व्हिच आर्टिकल है ना सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम जुडिशियरी टू एग्जीक्यूटिव अलग कितना नंबर आर्टिकल 50 वेरी गुड आर्टिकल 50 इज द राइट आंसर तापर देखो which of which article of Indian Constitution deal with the election of the President of India हला President of India अरे यार so which article of Indian Constitution deal with the election of President of India President of India रो election ऊपर कोडा describe करे कोडा describe article 52 54 55 56 देखो राइट आंसर हम आर्टिकल 54 है आर्टिकल 54 वेरी गुड दुई जन जाको ना तापर देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स है प्रेसिडेंट निजर टर्म ऑफ ऑफिस केते वर्ष पर्यंत से होल्ड कर रख पारे 4 5 6 एंड 7 केते वर्ष इजी क्वेश्चन एटा 6 इयर नहीं 5 इयर ओके 5 इयर है 5 इयर और अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ कैन बी इम्पीच ओके इम्पीचमेंट है ना इम्पीचमेंट केतन आर्टिकल अनुଯାয়ী हो प्रोफेसर ऑफ जीके बहुत दिन पर देखा ना कौन ओके आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल जो आर्टिकल तो कैन बी प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट केबे ही पारे है ना सो केते नंबर आर्टिकल अनुଯାয়ী पारे नो राइट आंसर आर्टिकल 61 ओके और जिंस समस्त मन रखित कि आमर गोटे हाईकोर्ट जज बोधे इम्पीचमेंट होता रिसेंटली इम्पीचमेंट है ना तो से गोटे ऑफेंस रे भी ये थे तो से इम्पीचमेंट मन रखित प्रथम जज इम्पीचमेंट है हु अपॉइंटेड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिबा कि एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्मा चंदाटा गोटे ना चंदा लोकटा सीजीआई प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण उत्सव किए नब प्रेसिडेंट बोला प्रोफेसर प्रोफेसर वेर आर यू प्रोफेसर गोइंग ओके द आर्टिकल डिफाइन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है कितने आर्टिकल को वाइस प्रेसिडेंट देखो वाइस प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट कौन जगदीश धनकर से जगह रेजिग्नेशन देइछन्ती सेटा पे इंपोर्टेंट होची तो प्रेसिडेंट को कोन वाइस प्रेसिडेंट को समस्त मन रखिदा
କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁଯାୟୀ କୋଉଥିରୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେଖ ଇନକମ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରି ଜାଣିଲେ ଚୋର ବିଦ୍ୟା ସାର ହେଲା କରି ଜାଣିଲେ ଚୋର ବିଦ୍ୟା ସାର ତ ଦେର ଲଟ୍ ଅଫ ୱେ ହେଲା ଯଦିଓ କି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କେସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଶୁଣିଥିବ ଗୋଟେ ଫେମସ ଜିନିଷ କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା ତାଙ୍କର କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଧରିକି ତାର ୱାଇଫ ତାକୁ କଣ କି ଆଲୁମିନି ମାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ଯଦି ସେ ଜାଗା ମତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଲୁମିନି ମାଗିବେନି ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ତିନିଟା ପାର୍ଟି ଏଙ୍ଗେଜ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜର୍ଜ ଏଙ୍ଗେଜ ଥିଲା ହେଲା ତାର ଫିମେଲ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଲୋନ୍ ପର୍ସନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ହେଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯିଏ ଜର୍ଜ ଥିଲା ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲାହ ସୁଜା କରିଦେବି ତୁ ମତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ନୋ ଡାଉଟ କିଛି ଭିତରେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଲଡ ଅଫ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ଠକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଥିଲା Article 67 is the right answer. And Article 67 na defend vice president 63 office of the अच्छा एटा टिके काउंटर चेक कर दी मु भी हला मु मे भी टिके भूल लिख दी जोड़ा लाउजी ओके जोस गनी तब तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओके नाइस सर ठीक अछि 63 हां एटा मु सर एटा मु टिके भूल लिख देला माइंड टिके डिस्टर्ब होछ मोरा सेति पे मु टिके ये लिख दी चला तब लगो The Vice President of Indian is the ex-officio chairman of which body? है ना Vice President देखिबा हमें Indian ex-officio chairman of which body है ना लोक सभा राज्य सभा नीति आयोग and then election commission. Okay, it is right answer है ना Okay, right answer जो देखिबा एटा हो हमरो राज्य सभा Okay, राज्य सभा is the right answer. तब देखो under which article is Vice President elected है ना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन केतना बार आर्टिकल अनुसार हो 64 66 67 68 वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन ओके देखो जो मन जाननो कोइ दे आर्टिकल 66 इज द राइट आंसर हला आर्टिकल 66 इज द राइट आंसर ओके तब देखो व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट Which article provide for the Council of Ministers to aid and advise the President 74, 75, 76, 77? Okay, 74. Article 74 is the right answer. So, who appointed the Prime Minister of India? Prime Minister appointed India. Who appointed the Prime Minister of India? Obviously, है ना इटा मोर नॉनसेंस को प्रेसिडेंट 75 ना 74 is the right answer होला 74 is the right answer हो ना सेटा तो 74 is the right answer हो Which article deal with the appointment of Attorney General of India? Okay, बर्तमान को इंडिया रा Attorney General किए अछंती इंडिया रा Attorney General किए अछंती ना इंडिया रा Attorney General अबे किए अछंती तापर देखो हम ओडिसा रा Advocate General होला ହେଲା Attorney General किए अछंती Advocate General अछि किए अछंती दुईटा जगह आंसर तुम कमेंट बॉक्स रे लिखो है ना कोन रहबे राइट आंसर देखो वी वेंकटरमण बस बस वेंकटरमण अच्छा ओडिसा रो Advocate General किए अछंती कहलो It have right answer article 76 okay article 76 is the right answer होगा जो मान देखो बहुत बढ़िया है ना पीताम्बर पीताम्बर आचार्य नहीं तापर which article describe the composition of the parliament of India ला parliament रो composition विषय को केतना नंबर article दर्शो है ना के दर्शो जे parliament रो articles गुरा विषय ला composition विषय ला 79 80 81 82 79 ओके तापर देखो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा केते मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा केते व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा है ना
अच्छा केते जन को नॉमिनेट करंती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट केते जन को नॉमिनेट करंती प्रेसिडेंट केते जन को नॉमिनेट करंती कहला आगे केते जन मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती प्रेसिडेंट केते जन को नॉमिनेट करंती 12 जन 12 जन ना 12 जन 250 इज द राइट आंसर आर्टिकल 80 द्वारा ही था है ना आर्टिकल एटी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा द्वारा है ना तापर देखो which article provides for the disqualification of member of parliamentary on the ground of defection okay যদি देखिबा जो आर्टिकल प्रोवाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन ପାଇଁ केते नंबर आर्टिकल दरकार 102 इज द राइट आंसर है 102 जो मान देते राइट आंसर 102 होगा राइट आंसर है 102 होगा यार है तापर देखो हु डिसाइडेड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना देखो कि के डिसाइड करो डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके के डिसाइड करो से जगह जदी कोन देखा डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर इलेक्शन कमिशनर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ओके प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर प्रेसिडेंट से डिसाइड करेला जुडिशियरी टू एग्जीक्यूटिव अलगा तो सेटा पे से जगह रे सुप्रीम कोर्ट रो रोल ए जगह किछि रहिबो नाही स्पीकर which article deal with the privileges and immunities of parliament and its members okay जो देखिबा तो आर्टिकल डील विथ द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू immunities of the parliament and its member आर्टिकल 104 105 106 107 केते नंबर रहइबो समान समस्त अनुरोध कोन रहइबो राइट आंसर ओके आर्टिकल 105 होला आर्टिकल 105 रहइबो राइट आंसर ए जगह ओके आर्टिकल 105 है ना तापर देखो द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डिटरमाइंड अंडर व्हिच आर्टिकल ओके जो देखिबा salaries and allowances of member of parliament are determined under which article 106 107 108 109 it is 106 right answer प्रीति एन मिथुन है जणा नहीं ओके 106 राइट आंसर है 106 तापर देखो मनी बिल है ना मनी बिल देखो मनी बिल रो इंपोर्टेंट रहउची रे भाई माने एटा ठीक मनी बिल रो समझते ठीक है देखो मार्क को रखि दो है ना मनी बिल केतनो आर्टिकल रे आसे 110 111 110 ओके मनी बिल आसे हमर आर्टिकल 110 रे है ना तापर देखो कि जो हु इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट मनी बिल को इंट्रोड्यूस करियो who introduced money bill in parliament Rajya Sabha only Lok Sabha only both houses of parliament and the president Lok Sabha only केवल लोक सभा देखिबला इंट्रोड्यूस मनी बिल की इंट्रोड्यूस करबा ओनली लोक सभा इंट्रोड्यूस करियो मनी बिल टा खाली राज्यसभा पाखु जीव नो डाउट है ना तापरे प्रेसिडेंट को असेंट हो प्रेसिडेंट सेटा को कोन की असेंट पे रिटर्न करियो नेला मनी बिल आसला देन से जगह सील मार के छाड़ी बेला नेला मनी बिल आसला देन से जगह सील मार के छाड़ी बेला तार आ कोन से निराकरण हे परियो नहीं which article deal with the president assent of bill okay केते नंबर डिसाइड करे कि प्रेसिडेंट को असेंट बिल 108 109 110 111 बस वेरी गुड ओके 111 इज द राइट आंसर है बोला 111 रहइबो राइट आंसर है ना तापर देखो कि द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अंडर टाइप ऑफ बिल फॉर रिकंसिडरेशन है ना देखिए द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न व्हिच टाइप ऑफ बिल फॉर रिकंसिडरेशन देखिबा प्रेसिडेंट को एटा को रिटर्न करि पारि हला प्रेसिडेंट रिटर्न द टाइप ऑफ बिल फॉर रिकंसिडरेशन मनी बिल यू नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल ऑल ऑफ देम
ऑर्डिनरी बिल को से कर परिवे किंतु हमें मनी बिल को से रिटर्न कर परिवे नाही रिकंसिडरेशन पाए हला तापर देखो व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हला इन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट पई हमें केते नंबर आर्टिकल देखिबा 124 125 126 127 है ना आर्टिकल 124 इज द राइट आंसर है ना तापर देखो व्हिच आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ओके अच्छा जो को माने तुम दी जन भितर कहि परिबो एड हॉक जज रो काम कोन थाए व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एड हॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट एड हॉक जज रो काम कोन कोन जानि छ समस्त मान जानि छ टिक हिंट दे दियो हला टेक योर टाइम आंसर दियो किछ असुविधा हला एड हॉक जज रो काम कोन हला को आर्टिकल दर्शाउची मु कहि दोची राइट आंसर कोन हला देखो आर्टिकल 127 इज राइट आंसर आर्टिकल 27 को 127 को एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए विषय दर्शाउची ओके वेरी गुड टेम्पररी पीरियड पे जॉइन होंदी कारण से जगह हम देखिया पाइबा कि सुप्रीम कोर्ट जदि सीट वैकेंट थिबो ना सेम इंपोर्टेंट फैसिलिटीज यही पाइबे एज फॉर ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ओके तापर देखो the which article grant the supreme court original jurisdictions in dispute between union and state okay तो देखिबा कि दुईटा स्टेट भितर जदि कोन होची देन से जगह सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन रहबो हला रहतो एग्जीक्यूटिव मानकर जदि कोन जिंस डिस्कशन हो से जगह रे सुप्रीम कोर्ट रो कोन प्रकार जिम्मेदारी रहिबो नाही है ना प्लीज जो माने ऑनलाइन रहतो समस्त अनुरोध की लाइक देना सब्सक्राइब करो प्रतिदिन 8:30 है प्रतिदिन इवनिंग 8:30 क्लास हुए है ना तो समस्त मन रखियो काली मैराथन क्लास करबा समस्त रेडी थियो काली मैराथन हबो मॉर्निंग रे मैराथन हबो प्रतिटी नोटिफिकेशन पई हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै जाओ है ना टेलीग्राम ग्रुप टी हमरो कमेंट बॉक्स रे मु प्रोवाइड करे देबी डोंट वरी है ना प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल है ना टाइम को देखो मु चेष्टा करूची 11टा को करियो हला 11टा भीतर चेष्टा करूची 11टा भीतर हला मते पेती रिमाइंड कर दो 11टा भीतर मु क्लास करबी मैराथन क्लास एमसीक्यू डिस्कशन एमसीक्यू मैराथन डिस्कशन हबो है ना तो समस्त रेडी थिबो हला आर्टिकल 131 इज द राइट आंसर आर्टिकल 131 इज द राइट आंसर है ना तब देखो द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके अपीलेट जुरिडिक्शन हला अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके 11:30 रे करबो हला 11:30 11:30 अरे मो पे हो किछो से 11:30 रे काली मैराथन क्लास करबा तो समस्त रेडी थिबो हला 11:30 रे काले 11:30 रे क्लास करबा प्रीति मिथुन एंड अन्य जो माने भी अछो हना हैशटैग तुम्हें भी काली जॉइन करो है ना मैराथन क्लास में देखो राइट आंसर कौन है 132 इज द राइट आंसर 132 इज द राइट आंसर ओके 132 इज द राइट आंसर है ना द आर्टिकल अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स टू एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ना तो आर्टिकल अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट कितना नंबर आर्टिकल ऑन जाय हो से जगह रे है ना प्रीति एंड मिथुन एफ एफ माने कौन व्हाट डू यू मीन बाय एफ आर्टिकल 32 ओके आर्टिकल 32 ऑन जाए ओके तापर देखो कि द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट जजमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल ओके देखो द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल आर्टिकल 136 137 138 139 ओके 137 इज द राइट आंसर है ना आउ प्रत्येक विवरण पे एबे तो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल है ना टेलीग्राम चैनल समय जॉइन करो ना मु टिके शेयर कर दोजी है ना एट द एंड ओके द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किए होछन बतन अंडर व्हिच आर्टिकल है ना
Comptroller and Auditor General of India under which article? ठीक है just give me 1 second. 148 okay 140 is the right answer है ना तापर देखो use article outline the duties of provide computer auditor general कितना article describe करची duties of computer auditor general प्रीति and मिथुन and CJ भी थिला है ना ना article का type रो सेटा पे pronounce कोनी है ना 49 okay 49 yes it is article 49 is the right answer and article 49 is the right answer है वो okay thank you everybody thank you प्रीति and मिथुन काली 10टा पे समझ 11टा सॉरी 11:30 रे मु गोटे मैराथन क्लास नेबी तो एवरीबॉडी यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट है ना तो समस्त टिके रेडी थिबो है ना देखो मु काली 11:30 रे आनिबी किंतु मिक्स आनिबी रिवीजन हैला पूर्वरो क्लास करा जाइतो सेगुडा के भी आनी हैला समस्त भी टिके सेटा रेडी थिबो प्रत्येक क्वेश्चन पे पूर्वरो जो क्लास करा हिची एबे जो क्लास हिची सब क्लास रो आनी हैला बुझलो ना तो समस्त प्रिपेयर था मिथुन प्रीति ओके थैंक यू एवरीबॉडी प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल